Hi everyone, welcome back. I am Yashita Sharma and I'll be covering a few more topics with you within the Snap series. अभी तक हमने काफी चीजें पढ़ चुकी हैं, सीख चुकी हैं कि स्नैप एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, स्नैप एग्जाम कैसा होता है and a lot of other things as well. But in this series that I am covering, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजुअली द नॉन एग्जाम पार्ट्स ऑफ स्नैप. तो आज हम कवर करेंगे आपकी लाइफ एक सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में कैसी होगी. व्हेन यू आर टारगेटिंग अ कॉलेज, व्हेन यू आर एमिंग फॉर अ पर्टिकुलर एमबीए स्कूल, आपके दिमाग में होती है ये चीज कि आपकी लाइफ वहां कैसी होगी. व्हाट विल द कैंपस बी लाइक, आपको वहां पे कैसा बैच मिलेगा, व्हाट विल द एक्टिविटीज बी लाइक, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द 2 years दैट यू स्पेंड इन एन इंस्टीट्यूट. तो आज हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो कि ब्रॉडली सारे सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स के लिए सही है. देयर कुड बी एक्सेप्शंस अबाउट कॉलेजेस जहां पे कुछ चीजें डिफरेंट हैं, बट मोस्टली द कॉलेजेस दैट यू शुड बी टारगेटिंग हैव एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट ड्रिवन. तो जितने भी सिम्बायोसिस कॉलेजेस हैं जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, especially the top colleges, the top 5 or the top 10 colleges under the symbiosis umbrella, वहां पे एक स्टूडेंट ड्रिवन कल्चर होता है. व्हाट डज दैट मीन? तो जो कमिटीज होती हैं कॉलेजेस में, फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट कमिटी और एन एडमिशन कमिटी और गेस्ट लेक्चर कमिटी, अ स्पोर्ट्स कमिटी, अ कल्चरल कमिटी, ये सारी कमिटीज होती हैं किसी भी कॉलेज में जो कि उस पर्टिकुलर चीज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं, पूरा उसको कैरी आउट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल जो प्लेसमेंट कमिटी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर connecting with the industry, connecting with the corporates and pitching to them why they should come to your campus for placements. Similarly, जो admission committee है, उनका पूरा काम होता है to carry out the entire admission process. They are not in the back end of the process, मतलब वो criteria set करने में, इन सब चीजों में नहीं involve होते हैं, but they are involved in taking care of the smooth process जो कि जिसके लिए सिम्बायोसिस कॉलेजेस जाने जाते हैं. तो आपके जीई, पीआई, वैट प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय द एडमिशन कमिटी. Similarly, the guest lecture committee will arrange guest lectures for you all. The sports committee will conduct sports tournaments, and the cultural committee will take care of the cultural aspect of the B school life. तो ये सारी जो कमिटीज हैं completely student driven है, और इनकी सबसे अच्छी बात ये है that I'm sure you must have heard that MBA is not just about textbooks and there is so much more you learn outside of the classrooms than in the classrooms. तो MBA जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके कॉन्फिडेंस से लेके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके एवरी सिंगल थिंग इज कवर्ड विद इन योर MBA. तो अगर आप किसी भी एक ऐसी कमिटी के पार्ट हैं, you have so much responsibility on you that you learn a lot outside the classroom. जब आप एक एडमिशन प्रोसेस या प्लेसमेंट प्रोसेस या एक कल्चरल फेस्ट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, देयर इज सो मच दैट गोज बिहाइंड द यू नो व्हाट्स विजिबल एट द फ्रंट. तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत काम आएंगे एंड यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू एक्चुअली वर्क ऑन ग्राउंड एंड गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. द सेकेंड पॉइंट इज डाइवर्सिटी. तो जैसा कि आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, बट सिम्बायोसिस का टैगलाइन है वासुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली. एंड इट डेफिनेटली स्टिक्स टू इट बिकॉज आपका जो बैच होगा वो इतना डाइवर्स बैच होगा. यू विल हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कंट्रीज, different regions. So many types of students will be there with you in your batch. And also sometimes there's an exchange program. So for example, in the last year there was, in one of the symbiosis institutes, there were Afghan students who came in for their MBA from Afghanistan to that symbiosis institute, and it's such a beautiful diverse batch. You get to interact with so many people, get to know about their culture. And it is always said that you should be surrounded by people who are better than you or different from you. तो आप उन लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे. The third point is corporate competitions, which is a very important point. So all the good symbiosis colleges have a legacy of decades. और जिस वजह से जितनी भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं,
they only organize it with a few B schools, and mostly symbiosis colleges, at least the top symbiosis colleges, are always there in the list. तो आपको opportunities मिलेगी corporate competitions में participate करने की. If you win, आपको cash prize and different prizes तो मिलेंगे ही, and a lot of times you will get an opportunity to convert that competition into a full-time job opportunity. अगर कुछ कंपनी से corporate competitions की policy होती है that the winners get a direct placement in the company, and which is really good because the companies are huge companies like Colgate-Palmolive, Hindustan Unilever, and a lot of other companies. So I can't even name them right now. They're like in like hundreds. So this is one very good thing. तो corporate competitions के लिए आपको बहुत अच्छा platform मिलेगा. आपके seniors जो होंगे वो आपकी help करेंगे. Your college will help you in providing you with everything that you need to prepare for the competitions. इसके बाद है fests. तो symbiosis colleges are known for the fun, and हर symbiosis college का एक signature fest होता है. It is a mix of cultural and a business fest जहाँ पे business competitions होते हैं, सब होते हैं. और उसके अलावा they call on different celebrities to their campuses for performances and a lot of things. It's a lot of fun. 2-3 दिन का fest होता है and you can enjoy. People from different cities come to visit your campus for the fest, and that is a time that you will always remember from the 2 years of your MBA. तो fest जो है बहुत amazing होते हैं symbiosis colleges के. आपको definitely, if you get a chance, you should definitely attend one of those fests and you will have the time of your life. Next है guest lectures. तो guest lectures इसीलिए इतने important है क्योंकि जो college की full time faculty होती है, they can only dedicate some amount of time to you. They will only teach you what is told to them, right? But when guest lectures happen, people from the industry who have so many years of experience and who have so many years of learning that they can impart to you is so beneficial to you. जब guest lectures होते हैं आपको एक completely different perspective मिलता है from what you've been studying so far. तो guest lectures जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, guest lecture team होती है जो guest lectures भी organize करती है. और अगर किसी college में guest lecture team नहीं है, then the college takes care of it, the administration takes care of it, and they make sure that you have enough number of guest lectures to understand and learn the basic nitty-gritties of how the industry works, which is why guest lectures are very important. इसके बाद है Symbeat. ये मैंने इसीलिए लिखा है because I come from one of the symbiosis colleges, और उनका एक signature cafeteria है जिसका नाम है Symbeat, and that place is like the hangout place for everyone. So you will find the entire batch at different times hanging at that place and having conversations, preparing for their exams while eating different things, and it's a place that binds people together, that brings people together. So many friendships are born in that place. So this is one of my personal favorites when I talk about the symbiosis colleges. और लास्ट में मैंने लिखा है recreation. तो recreation के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. If you're in a symbiosis college, you will have recreation in the form of sports events that take place, in the form of fests. आपके पास gym facilities हैं, आपके पास library है, and all the symbiosis colleges have a signature set of 2 dogs in their campuses, mostly Labradors, which they name after the currencies. So for example, SIBM पुणे में 2 Labradors हैं जिनका नाम है डॉलर एंड पाउंड, and SCMHRD में 2 Labradors हैं जिनका नाम है दिनार एंड लीरा. And this trend continues in most of the symbiosis colleges, which is a very good thing. And for all the people who love dogs and need some recreation at the end of your tiring day, you just go and play with them, and it makes your day. तो ये जो बेसिक चीजें मैंने कवर की हैं, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इसके अलावा there is so much that symbiosis will give you. So symbiosis colleges are mostly located in beautiful cities. Like अगर हम SIBM, SCMHRD और कुछ दूसरे colleges की बात करें तो वो पुणे में है. Some colleges are in Bangalore, some are in Nasik, and so on. तो ये सारे जो symbiosis colleges हैं, they are situated in beautiful cities. You will get a chance to experience the culture of that particular city. आपके जो बैच है, that batch will teach you a lot. You will not just make friends, but you will learn so much from different people who are a part of your batch. And on top of that, the college is very cooperative. They will help you in every way possible to make you the kind of person that you want to become. And when you step out of the college, you will be a completely different person and much more confident and much more capable of doing things. और आपके placements are irrespective of which symbiosis college that you are aiming for. Placement symbiosis के बहुत amazing है.
मैं प्लेसमेंट्स की बात अभी डिटेल में नहीं करूंगी, वी विल कवर इट द प्लेसमेंट्स, बट द Symbiosis name itself has so much credibility that all the companies from different industries want to come to the campus to hire the students, because they know that the kind of education that those students will be receiving will be at par to the IIMs or other colleges like XLRI or other colleges that you're aiming at. So yes, although some Symbiosis colleges may not be in the top 5 or the top 10, but they definitely have their place in the top 15 and top 20 colleges in the country, and they're growing at an amazing speed, at an amazing pace, which is reflected in the kind of alumni they have. So we will have a separate section on the kind of alumni that Symbiosis colleges have made, एंड आई होप कि लाइफ एट Symbiosis के बारे में आपको समझ आया होगा. एक छोटा सा ट्रिविया मैं आपको देती हूँ. सो दो जो कॉलेजेस हैं पुणे में, SIBM एंड SCMHRD, ये दो कॉलेजेस आर सपोजिटली राइवल्स बट देर ऑल्सो सिस्टर कॉलेजेस. So while SIBM Pune is said to be on the top of the hill, SCMHRD is said to be at the bottom of the hill. And दोनों कॉलेजेस की थोड़ी थोड़ी राइवलरी चलती रहती है, बट इन दी एंड ऑल द Symbiosis colleges stand together united under the Symbiosis umbrella. So you will have an experience of your lifetime if you are attending any of the Symbiosis colleges. I hope this was informative to you, और ये सारी चीजें आपको और मोटिवेट करेंगी to prepare well for SNAP and the further processes. And I really hope you end up in an amazing college, the college of your choice. And if it happens to be one of the Symbiosis colleges, I'll be very glad, because I know you will be experiencing something completely different that you have not experienced until now in your life. I will be covering a few more topics within the SNAP series. I'll see you soon. Until then, study hard and all the best.